Good morning, Dr. Rajiv. I'm very good, thank you. How about you? Yeah, I am also fine. Dr. Sirat, you are welcome to this summit we are conducting on purpose, success for achieving financial freedom in life. Thank you for having me. My pleasure. You are one of the co-authors in this book, Grail 2, which includes purpose of life of 40 authors from different continents and from different environment. This book is all about life of these 40 authors and what they do, why they do, and where they want to reach. Their purpose of life is explained very well in this book. And this book is available on Amazon.com, Philip.com, and Notion Press. So you can go and buy this book and find out your purpose of life. So this is for audience. I am Dr. Yes. Rajiv Agarwal, finance and wealth coach. I'm helping people to become financially free in life. I advise on life coaching and business coaching to industry as well as individuals through a mastermind which is called Beautiful Money. In this mastermind, we meet for 14 weeks, and every week we do different power league to strengthen your financial possibilities in life. And then we continue to draw a financial path for achieving financial independence in life. So today we have Sirat Uzra with us. She is also part of co-authors of this book. Let me introduce Sirat to you. Sirat is a MBA marketing. She has done MBA marketing. She is a corporate professional turned mom of three beautiful kids, turned self-care coach, co-founder of I.M.P.A.C.T coaching, Impact coaching in short form. Create Your Bliss, author of the book. Oh, so she is a author of another book called Bliss. Dr. Wandering Rajiv, woman that's to my book yeah, is yeah. Wandering Woman to a Yeah, Wonder it Woman. is coming. Author of the book Wandering Woman to Wonder Woman. Wandering Woman to Wonder Woman. Wow. And co-author of Grail, Take Your Life Right with Purpose. Yes. So welcome Sirat to this summit. Thank you So so much, this Dr. I was Rajiv, for just having me. reading your short profile. However, our audience would like to hear from the mouth of the horse. Tell us about your life journey, about your program, and how you are helping society, and which section of society you are helping. Yes, Dr. Rajiv, it's a pleasure to be here. Thank you for inviting me. And I'm the proud co-author of the book that we both share, which is so close to our heart, Grail. But how I came here is the journey that I would like to share with you is because I've always been a very uh, independent person from childhood. I was given the liberty to do whatever I felt like doing. So there was no differentiation in my house between boys and girls. So I was a tomboy for that matter. I was an athlete, I was a dancer, I was on my feet all the time, you can call that. And that kept me a sense of, identity that I had was like, I can achieve anything and I'm a winner. So lived with by that principles for very long in my life. And to be honest, the contribution that I would have been doing to somebody is something which never struck me. I never even thought, if I would have been in a position, what would I like to do? But I knew from within that I was always a person who wanted to give and share and gift people. That was the most joyous thing I wanted to do. I love to give away just to see the smiles and the sparkle in people's eyes. When I got gifted, and my love language was probably that I wanted to give something to people which they wanted, not necessarily ke jo I want to give them, but I would always ask them, "What do you want?" And that would be the precious gift that I would give them. So what I did, as for all the intellectual people in the house that we had, there was one problem, not problem exactly, but there was a issue that we dealt with was communication. We had this intellectual people in the house, all educated and qualified, and we still struggled with communicating with each other.
So very long in my life and later on as well, I just realized that there was so much of issue with communication that I should do something about it. It's not the language, it's not the we know each other from childhood. So family is a unit where you start from. If there is a communication gap, then how would you go ahead and put your message across to the world? So we thought that we should work on that. So my program, which is impact coaching, focuses and addresses this main issue about understanding it works from an enneagram perspective, where we understand who you are and what motivates you and drives you, and how you communicate with three different areas in your life. One is with yourself, one is with the people around, and also with your higher self, or you can call God, or it's how you surrender to the higher power. So that makes you in a holistic way in sync with the whole system, the body, mind, and soul. So I would like to give a comprehensive thing on that. Wow. So you are creating a sparkle in the life of young generation by touching their heart, soul, and mind. Yes, that is the mission. Wow. Wow. So can you give us some outcome of your program? Well, means where they are and where they are reaching. See, Dr. Rajiv, my thing is like when you are on this planet, we are here for a purpose. And the two special things that we carry with us every time since we are born is one is the gift of time, which is the breath that we have. And also the second one is the power of your free will, which is the decision making. So, on these two aspects, your whole life circles around. So, for the time that you're on this planet, how do you choose to spend that time will decide what outcomes and what things that you purpose. And I think your purpose is defined by your identity. So, it's a progression that happens every time there's a shift in your identity, like you become. For me, it would be like I was a daughter, then I became, we got married, then became a wife, then I became a mother. And every time there was a role switch, there was an identity change, my purpose would have been enhanced and maybe changed for that matter at that particular period of time. But it is very important for an individual to be connected to themselves and know who they are. So that way, I think I had in relation with everyone else except for myself. So my spiral was like the center, say, it didn't go out. It was from outside that it spiraled and became come back to my center. So that's how I Oh, found myself. very good, very good, very nicely explained with the metaphor. So, Sirat, also tell us that you were corporate professionals and now you are independent, doing your own coaching business in this impacting the life of many. So, tell us something more. How did you decided to shift from corporate life to this life, and is the transition smooth, or you Wow. were having struggles between the two? Okay, I'm going to try and make this story short for time's sakes. But the truth is that I did my MBA. I was very ambitious. I wanted to be independent every time. I was in Dubai. I was raised and brought up there. I was so exhilarated. Got my driving license. Got myself a job in a MNC in a big corporate firm, and I worked there for a decade and plus. But after which I got married. I got this beautiful children. Before when I had my first child, I decided that my career should take a back seat and I wanted being a mom to prioritize that. And so that my give my priority to my children, I take a career break for a decade and more. So Dr. Rajiv, that's where I did a lot of, I'd say social work on the, hindsight. But then if I want to put it, I wouldn't call it like not working as such because it was a lot of hard work. Like, if you're a mother 24/7, that's a lot of unpaid labor, I say. And that is a journey that is beautiful as it is. I would something that I cherish. And for career side, for that matter, after very long, I decided I should come back, and now the children were grown up, and I had a change in the family dynamic. So I decided that I should bounce back and stand on my own feet. And so ironical that I had a ligament tear, and that's when I decided to stand. Like, with a ligament tear when I actually couldn't physically stand, and I thought mentally I should.
So that's how the process. And I took up coaching, and that was all truly because of my mom. And my family has been a great support, and they helped me to battle any issues that I had, and they're always behind to like a pillar, and they helped me to get where I am today. So I'm a coach right now, and I am so determined to help women to understand that they are the pivotal point of the society, if I may say, because it all life comes through them. And they are the givers, and they are givers of life, and they're givers of sustenance. And if you are the empowered one in the family, I just see one thing. If my mom is smiling, the house is smiling. If the lady in the house is smiling, everybody's smiling. So that's the thing you should keep in mind and go with that. Because empower woman is empowered generation, and empowered generation is like a whole empowered society. Wow. Empower women, empire generation. Empire generation means empire society. Empowering society. Yes. So great, Sirat. I really admire that you have explained this very well, and how you moved from your corporate job to family. Then you moved from family to again impacting life of others, and you also understood the importance of upskilling. You did you did not just started business or entrepreneur. You first got upgrade to your technical skills as well as personal skills, so you became trained in helping people by coaching, and then you are into coaching business. So it really makes a lot of difference when people move from corporate job to some business. They think that they know everything, but which is a myth. If they really want to help people, they have also to make this transition from what you are doing in corporate life to what you want to do in coaching business. There is a big transition needs to be done, and you rightly took the steps. You got certified, you got trained in doing that thing, you were able to identify what you want to do, and now you are doing it very well. That is how you get trained and then help others to actually follow what you are telling them to do, and it really makes That's a so. difference also. Yes, Dr. Rajiv, I believe in preaching, not teaching. I said, preach, practice what you Correct, preach. When you correct. haven't done it yourself, it is not as impactful to tell something or tell others to do when you haven't actually done it and implied on yourself. Learn from people who have actually done it, walked that path, done that, been there, that kind of stuff. Wow, very nicely. So you have clearly given a definition between coach and mentor. Coach is teaching, mentor is preaching. So you are directly reaching to a mentor stage, which I know people take years of experience as coaching business. Then they may or may not reach to mentor stage, because mentor is creating, coach is teaching. For sure, this is the very rightly you explained. I don't know whether you understood this very well or not, but preaching is done by mentors and I have coaching to is give the done by. credit to I have to give the credit to our mastermind group. When I came here and I met with Mr. David Nair and Nawaz Maka and people like you, I immediately know the difference between the two, and I'm very sure that that's where I get it from. Very nice, very nice. So keep it up, and you get more maturity, and your level of questions will improve when you act from that level, not from teaching level, but for preaching level. You will always be on higher scale, and the students who will learn from you will resolve his all problems of life through your powerful questions. So mentor is only asking questions, I know, and teachers is also explaining how to get answers to those questions. I always believe that it is better to empower somebody else to empower themselves instead of Correct. we being the support all the time. It would be great if if you could empower them and make them stand on their own feet and make them realize the superpower they have within.
So unleash the Correct. superpower you have within is something I'm very, very passionate about living your dream life. There's nothing impossible. I want that to go out as a message to all the generations. You can live your dream life. It's possible. You can do it. Wow. So, Sirat, this brings me to move forward on. You also attended MRM, and where you got this opportunity to write the book Grail. So, how did you find MRM Mastermind? Give us some one or two concrete outcomes out of the mastermind, and what was your feeling when you were asked or when you got opportunity to write chapter in the book Grail? Wow, this is a milestone, first of all, in my life, Dr. Rajiv, to be part of this great mission. Of, I have this book with me all the time. I'm a co-author. I'm such a proud co-author of this book because this book means so much, because I was introduced to the MRM platform by Nawaz Maka. She's one of my favorite mentors and coaches. And I got introduced to Mr. David Nair, who is just a gem of a person. He is the uh, altruistic philanthropist I've ever seen, who is always giving and giving and giving. And he's that nourishing person. He's I've just admired the amount of effort that he puts in, and the consistency he puts in, and the energy that he puts in, and he keeps people alive. The group, the MRM group we're part of, is just standing so strong on three principles which I completely resonate, which is faith, commitment, and discipline. And I think the training itself is so intense that you are trained to become not perfection, not to attain perfection, but to attain excellence. And that makes the whole difference. So when you are aiming for excellence, it's sharpening your skills and source to be the best version of who you are, not emulate anybody else, but your unique self. And I just love that concept of being, best of who you are. And I think that's how it should be, because everybody Great, comes great. on this planet with a purpose in life, and everybody's gifted with different gifts to realize what their gift is and make optimum use of it for yourself and for others. That is what the purpose is all about. सो सीरत हमारे ऑडियंस में एक ऑडियंस है जो बोल रहा है हिंदी में बात करो. So let us talk for ओह, 5 minutes in Hindi. I think is क्यों Mr. नहीं, जरूर Krishna जरूर। Ghosh. Mr. Krishna Ghosh. जी जी, Let आपके us लिए one. मिस्टर हाँ. कृष्णा, हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं। So we have a mixed audience in Hindi and English, so it's okay. डेफिनेटली, आई So कंप्लीटली अप्रिशिएट देम, सल्यूट देम। कोई भी लैंग्वेज हो, तो आपकी जो पैशन जो है ना, फ्लो होनी चाहिए। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट वी आर कनेक्टिंग टू ऑल वाइडर ऑडियंस। सो यस डॉक्टर राजीव। बहुत अच्छा. तो आप मुझे बताओ कि ये सबमिट जो हम कर रहे हैं इसमें हम पर्पस, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात कर रहे हैं. जी। सो टेल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस, आप आप फाइनेंशियल फ्रीडम से क्या समझते हैं? वाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए यू कैन मिक्स सच इन बात इंग्लिश यह है हिंदी, कि इज ओके. हाँ, मैं जो या फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना डॉक्टर राजीव, अब मैं थोड़ा सा हिंदी में ही बोलती हूँ कि हाँ. आई हैव बीन टेकन केयर ऑफ ऑल माय लाइफ। तो मुझे हमेशा लगता था आई एम ब्लेस्ड, मुझे जो चाहिए वो मुझे मांगने से मिल जाता है। एंड आई नेवर स्ट्रगल, एंड मुझे पैसों की ऐसी कोई कभी ऐसा नहीं लगे कि मुझे कमाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मुझे मिल जाते हैं। आई मीन, आई ऑलवेज, माय डैड ऑलवेज सेड दैट यू आर वेरी लकी। आप कोई राफेल किसी में भी मेरा नाम डालो, मेरे को मेरा नाम निकल आता है। तो मुझे ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई हैव टू वर्क हार्ड। आई नेवर एसोसिएटेड अर्निंग मनी विद वर्किंग हार्ड। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन दैट was the concept I grew up with. कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि I am a little religious on that concept. तो वो वहां पे बोलते हैं कि आपका रिस्क जो है वो लिखा हुआ होता है. So the effort that you do is for you to contribute with your heart to other people. But जो आपको मिलना है वो वैसे भी आपको मिल ही जाएगा. तो मैं जो हूँ पैसे से रिलेटेड कोई भी ऐसे मैंने कभी भी प्लान नहीं की. Even when I was a very corporate successful person, I never budgeted myself or never इन्वेस्टेड इनटू एनीथिंग। तो एक थोड़ा सा रिग्रेट वहां पे रह जाता है कि मैंने कुछ करना चाहिए था। लेकिन एक आइडियल मैसेज अगर मैं देना चाहूँ किसी को, तो मैं ये कहूंगी कि आप जरूर से आपके जो फाइनेंसेस हैं इस तरह से हैंडल करें कि आप इन्वेस्ट करें,
जहाँ पे वो फिर आपको रिटर्न्स दे। तो रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आए तो आपको जिंदगी भर कमाना नहीं पड़े, इस वजह से आप जो है एक एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं उसके बाद, जहाँ पे आप यू आर नॉट लाइक वर्किंग 24/7 और ऑलवेज परेशान नहीं हो। एक चिल आउट लाइफ जिए आफ्टर सम टाइम। क्या बात है सीरत जी, आपने जो बताया, आपकी आपको क्या समझ आता है फाइनेंशियल फ्रीडम से, तो आपका जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि आप कैसे लोग उसको समझते हैं और क्या उनको करना चाहिए और क्या वो करते हैं। तो मैं एज ए मतलब मैंने सारी पूरी लाइफ फाइनेंस के ऊपर काम किया है और मैं लोगों को यही सिखाता हूँ कि कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो जैसे कार खरीदना एक गोल होता है, वैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना भी एक गोल होता है। तो ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल काम है, बट जिसको समझ आ जाता है वो डेफिनेटली अचीव कर लेता है इसको। तो हम जो बोलते हैं कि कौन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है या कौन बनना चाहता है या कौन बनने की तरफ जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि जब उसको ये जो निर्णय लेना होता है कि अभी मेरे को कुछ करना है, चाहे वो उसको डिजायर हो या उसका ड्रीम हो या उसके एक्सपेंसेस हो रेगुलर, जब वो डिसीजन लेने में उसको कोई परेशानी नहीं होती, मतलब जब उसने डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है और कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं कि पहला कदम बढ़ाया उसने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। कि हाँ, सही। अब वो ऐसा हो गया है कि उसको जो अपने एक्सपेंसेस हैं, ड्रीम्स हैं या डिजायर्स हैं, वो पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होती और वो अपने नए ड्रीम्स लेता है और उनको पूरा करता है। तो हम बोलते हैं कि अगर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है या पहुंचना है वहां तक, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बजट बनाना सीखना पड़ेगा। आप बजट बनाओ, उसके अंदर आप अपने जो खर्चे करने हैं वो लिखो, जो आपके डिजायर्स हैं उनको फाइनेंस में कन्वर्ट करके लिखो, और फिर जो आपके ड्रीम्स हैं उनको भी आप फाइनेंशियल टर्म्स में लिखो। ड्रीम्स हो सकते हैं कि आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, आपने कोई अपनी ग्रोथ के लिए कोर्स करना है, अपस्किल करना है, या फिर आपने गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सब आप बजट में लिखो। तो बजट का मतलब जो लोग समझते हैं कि अगर इनकम है तो वो लिखते हैं, जो इनकम ही नहीं है वो लिखते ही नहीं है। तो बजट का मतलब ये नहीं होता कि इनकम कहाँ से आएगी। बजट का मतलब होता है कि आपने क्या खर्चना है, आप क्या समझते हो कि जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है वो आप उसमें लिखो। जब आप उसको लिखते हो, जब आप उसमें आ जाता है, तो आपकी जो इनकम है उससे जो पूरा होता है उसको उस महीने में पूरा करो, और जो नहीं होता है उसको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे उसको, तो नेक्स्ट मंथ में उसके हिसाब से इनकम होगी या नहीं होगी, वो 3 महीने कैरी फॉरवर्ड होगा या 4 महीने कैरी फॉरवर्ड होगा या 2 साल कैरी फॉरवर्ड होगा, बट वो आपके फोकस में रहेगा। जब आपका ध्यान उधर रहेगा कि ये खर्चे मुझे करने हैं, ये मेरी डिजायर्स हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा कि ऑटोमेटिकली या तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे या आपकी पर मंथ इनकम बढ़ेगी, पर आवर इनकम बढ़ेगी। तो आप उसके लिए एफर्ट्स करोगे, तो आप भी एफर्ट्स करोगे, आपको यूनिवर्स भी हेल्प करेगा, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आपके 2 से 3 साल में पूरे हो जाएंगे ड्रीम्स। तो अब आते हैं हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या बोलते हैं हम, कि जितनी आपकी इनकम है, आपने इनकम भी लिखी, आपने ड्रीम्स भी लिखे, आपने डिजायर्स भी लिखी, तो आप उस इनकम में से 10% सेव करो। आप स्टार्ट करो कि 10% जो इनकम है उसको बचाओगे। जब आप इनकम बचानी शुरू करोगे, तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे। आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो। शुरू में आप बैंक में लगाओगे, डिपॉजिट, एफडी, फिक्स डिपॉजिट बनाओगे, पोस्ट ऑफिस में लगाओगे, रैकरिंग डिपॉजिट करोगे, या आप कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी में लगाओगे जहां से रेंट आएगा या उसमें ग्रोथ होगी, या शेयर मार्केट में लगाओगे, शेयर मार्केट में शेयर सेलेक्ट करोगे, वो खरीदोगे। वो आप अपने हिसाब से कि कितना आपने रिस्क लेना है, कितना अमाउंट है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी से सहायता लोगे, कंसल्ट करोगे, तब करोगे। तो वो आप जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो उसमें से आपको या तो मंथली इनकम आती है या फिर ग्रोथ होती है उसमें। तो ग्रोथ भी इनकम ही है। तो उसके बेसिस पे आप अपना बजट का जो शॉर्टफॉल था,
कमी हो रही थी, इनकम कम थी, बजट एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, तो वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो जब आप उस स्टेज पे आ जाओगे कि जब आपकी पैसिव इनकम जो आपको बिना टाइम लगाए मिल रही है, या वो शेयर से मिलती है, या फिर वो घर के रेंट से मिलती है, या बैंक डिपॉजिट से मिलती है, जब वो मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ चले जाओगे। जब 2 साल कंटिन्यूसली ऐसा होगा कि आपकी इनकम ज़्यादा है, पैसिव इनकम ज़्यादा है, और आपकी एक्टिव इनकम सारी इन्वेस्ट हो रही है, जिससे कि पैसिव इनकम और बढ़ती जा रही है, तो वो जब साइकिल में आ जाओगे तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट 2 से 5 साल में 100% अचीव कर लोगे। अगर आपका गोल होगा कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, और आप उसके लिए काम करोगे, एक्शंस लोगे, तो आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी नहीं करोगे। तो जब आप आपका पर्पस पूरा करोगे, जब आपने पर्पस आइडेंटिफाई किया, उसके लिए आपने बुक पढ़ी, आपने पर्पस आइडेंटिफाई किया, आपने उस पर काम करना शुरू किया, एक्शंस लिए। जब आपने अपने पर्पस को अचीव करने के लिए एक्शन लिए, तो ऑटोमेटिकली उनसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी, तो आप उस साइकिल में आ जाओगे कि आपको पर्पस भी मिल गया, वो भी पूरा हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल गई, वो भी पूरी हो रही है। तो सक्सेस इज ए बाय प्रोडक्ट। जब आपको ये दोनों मिलेंगे तो सक्सेस तो आ ही जाएगी। तो अगर आपके पास ये तीनों हैं, पर्पस भी क्लियर है, आपकी फाइनेंशियल इनकम भी अच्छी है, और आपके को सक्सेस भी मिल गई, तो आपकी हेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप, बाकी जो भी चीजें हैं वो सब बाय प्रोडक्ट हैं, वो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं उसके। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप जो भी करो वाह वो। डॉक्टर राजीव, आपने इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया ये पूरा। दिस इज सो अमेजिंग। आई थिंक गाइस आपको इससे बेनिफिट करना चाहिए। डॉक्टर राजीव के मास्टरमाइंड जरूर ज्वाइन कीजिए। ही इज सो गुड एट दिस, एंड ये अपना जो काम करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो आई डेफिनेटली हैव टू बी एसोसिएटेड ऑन योर मास्टरमाइंड डॉक्टर राजीव। आप काउंट मी इन, बिकॉज मैं जो हूँ ऑल्सो, मेरा इस तरीके से नजरिया है कि आई बिल्ड अ कैरेक्टर। मैं अपने आप को एक फिलंथ्रेपिस्ट की तरह देखती हूँ। तो मैं जब इनकम कैलकुलेट करती हूँ, मुझे इतना चैरिटी देना है रमजान में, तो मैं उसके हिसाब से 1 साल पहले कितना कमाने शुरू करूँ कि मैं इतनी चैरिटी दे सकूँ। हाँ, बस तो बस बस बस। so तो जो हम बोलते that's the हैं, way। हम जो सेविंग के लिए बोलते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पहला 10% सेव करना शुरू करो, फिर 10% आप अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सेव करो, फिर 10% आपको डोनेशन के लिए भी करो, फिर आपका ऑटोमेटिकली वो साइकिल बन जाता है। तो हर तरह की आपकी ये सब डिजायर्स में आते हैं। आप जो कंट्रीब्यूट करते हो रिलीजन के लिए या डोनेशन के लिए, वो सब आपकी डिजायर्स हैं, आप करना चाहते हो। तो जब आप करना चाहते हो तो वो बजट में प्लान करोगे। जब बजट में प्लान करोगे तो वो एग्जैक्टली पूरा exactly। होगा ही होगा, पूरा ना और होने का कोई आपका भाई मतलब ही नहीं होगा है। वो, आपका मेरा ड्राइविंग फोर्स ही हाँ वही है हाँ, कि मुझे देना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपका ड्राइविंग फोर्स वही है भाई। जब तक पता नहीं चलेगा, आप जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप सुबह क्यों उठते हो, सोते हुए सोते ही रहो तो सबसे ज्यादा मजा आता है ना। जब आप उठते हो तो आपकी वाई क्लियर होगी तभी उठोगे, जब आपका पर्पस क्लियर होगा सही। तभी उठोगे। तो अगर मैं तो पर्पस आप फायर ठीक फायर बनाओगे। जी जी, फायर टू हाँ फायर की हाँ। मॉर्निंग सेशन की जाने की खुशी में उठती हूँ जब मार के। तो वो तो एक बाय प्रोडक्ट है वो भी। फायर टू वायर इज ए बाय प्रोडक्ट फॉर अटेंडिंग mental resilience mastery, which is a एग्जैक्टली। mastermind we are running for helping people to build their mindset and skill set. And राइट। fire to wire is building habits. So अगर हम सही माने तो हम जो हैं, हमारा करेक्टर जो है, वो सिर्फ आदतों का पुतला है। सही। हम बने हुए हैं बिल्कुल आदतों सही। से। हम जो आदत होगी वही काम करेंगे, तो हमें क्यों ना अच्छी आपको आदतें पता ही नहीं बनाएं। होता है कि आपको, यू फर्स्ट डू इट एंड देन यू थिंक अबाउट इट, ये हाँ इतना हाँ हाँ ऑटोमेटेड हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो समझना चाहिए। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं हम अपने जी। इंटरव्यू को। तो हमें आप ये बताओ कि आपने जो काम मेंटल रेजिलियंस मास्टरी में, फायर टू वर्क में और ग्रेल बुक में लिखा, उसके बेसिस पे आपका जो पर्पस है, और आप जो अपने वर्कशॉप चला रहे हो, और आपने जो सक्सेस लाइफ में अचीव की, जो आपको सफलता मिली, अब उसके उसमें से कोई 2-3 चीजें ऐसी जो कि ऑडियंस हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, जो हमें सुन रहे हैं वो अप्लाई कर सकें, उनके बारे में बताइए आप। डॉक्टर राजीव, मैं अपनी पूरी समरी अगर बताऊं तो पूरी लाइफ में मैं फ्रॉम अ हैव ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ पीपल प्लीजर
to being a self critic, and now I've finally become a person who's forgiven. और मुझे लगता है कि अपने आप रिलेशनशिप जो है ना, किसी भी इंसान, हम लोग क्योंकि वी आर सोशल बीइंग्स, हम पैदा होने से ग्रेव तक हमारी वी कीप हैविंग इंटरेक्शंस विद पीपल. सो व्हेन द इंटरेक्शंस विद पीपल आर गुड, and when you're contributing and you have a good relationship with yourself, which is so much to do with your self talk, your self image will be based on that, and how you treat yourself, that's how it will, kind of ripple off and give दूसरों के लिए भी आप वैसे ही बनोगे जो अपने आप के लिए हो. तो मैं बहुत हद तक अपने आप के ऊपर बहुत क्रिटिकल होती थी. तो मैंने अपने आप को फॉरगिव करना सीखा है. जहां पे मेरी सक्सेस, मैंने सोचा कि वहां से इवॉल्व की, व्हेन आई बिकेम मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग टू माई सेल्फ. फिर मैं लोगों को फॉरगिव कर सकी, तो फिर उससे मुझे फिर लोगों के लिए रिजेंटमेंट नहीं होता था कि इस सर्कमस्टांसेस को और चीजों को ब्लेम नहीं करती थी. And I'm not now blame. I mean, I'm not a victim anymore of what life is not happening to me. I'm like, I'm creating life for myself. तो मैं choose करती हूँ कि मैं कैसे behave करूँगी. How do I kind of respond, not react. That's how you say it, the correct thing. तो आप जब चूज करते हो ना आपकी लाइफ, यू गेट टू डू थिंग्स, यू नॉट फोर्स टू डू थिंग्स. दैट्स लाइक एम्पावरमेंट इन इटसेल्फ. आपको इतना अच्छा फील होता है कि दिस इज व्हाट आई चूज टू डू, ये मैं कर रही हूँ मेरे लिए, and मैंने चूज किया है. So this relationship, this bonding of you with yourself will create a good bonding with people around you, and most importantly, your relationship with your almighty, आप जिसको भी believe करते हो, the higher power is very very crucial, because you need to surrender. आप कितने भी efforts कर लो और उसके बाद आप सोचोगे कि आपके outcome को आपने let go करना है, क्योंकि the outcome will be decided by the creator, because we are all on a journey. And I think on this journey we need to make the optimum use of the two like beautiful things I mentioned in the beginning, the time that we have on the planet and how we choose to spend it. And these two things will be so related to the purpose you have in life, the identity that you create for yourself. अगर मैं सोचूंगी मैं फायर फाइटर हूँ या मैं सोल्जर हूँ, तो मैं आखिरी दम तक वो सब काम करूंगी जो मेरे आइडेंटिटी को ट्रू होगा. तो आपको क्या किसी को बात। बताना नहीं पड़ेगा और आपको कोई मोटिवेट करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स इनग्रेन्ड इन यू, इट्स योर आइडेंटिटी. सो दैट्स व्हाट आई प्रमोट. यही मेरा मैसेज है कि अंडरस्टैंड हु यू आर एंड देन लिव हु यू आर. तो आपको वो पूरी किसी और मोटिवेशनल स्पीच और बाहर से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हेन यू आर इन सिंक विद योरसेल्फ, बॉडी माइंड एंड सोल, you will understand your purpose on this planet. And आप यहाँ पे like for Islamic period में थोड़ा सा अपना perspective यहाँ पे लाती हूँ, हाँ because हाँ। we live this life to collect good deeds. हमारे लिए होता ये है कि here we are to create हम लोगों का मेन पर्पस मैं अपना कुरान से ही लेती हूँ कि we are here to praise and worship the creator. और worship भी दो सेंस में होता है हमारे लिए. एक जो है serving, there are some things that we do for the creator and some things that you do for the creation. So your relationship with creation is also crucially important. What you contribute to the society, what footprints you leave behind, what have you given to the world. Like आप आए इस दुनिया में और चले गए, तो आपने क्या छोड़ा पीछे, क्या आपके the legacy that you leave behind. Legacy you So that left is what is behind. the good deeds that you take along with you, because like I said, financially मेरे बैंक अकाउंट में मुझे चाहिए कि मेरे ऊपर, I don't invest in property on the earth, I need a property in heaven, so that's where I'm investing. Wow, wow. So, Sirat, it was really very nice to hear you on this platform. And I'm sure हमारे जो दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, उनको बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा अपनी लाइफ को बदलने का. और मैं ये कहूँगा कि अभी जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो एक बुक के बारे में कर रहे हैं. ये जो बुक जी. है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बुक है ग्रेल 2, Yes, great too. टिक योर लाइफ राइट विद पर्पस. सो ये बुक है जो कि हम 40 ऑथर्स ने मिलके लिखी है. इन 40 ऑथर्स को दुनिया के हर डिफरेंट कोने में हैं. इंडिया से हैं, यूएई से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं. और उन्होंने सब अपने वाई, क्यों वो करते हैं, क्यों क्या वो करते हैं, क्यों वो करते हैं, और उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसके बारे में इस किताब में लिखा है.
तो जो कि सभी दर्शकों को इसको पढ़ने से उनको इस किताब के बारे में भी पता चलेगा, उन ऑथर्स की जो सक्सेसफुल लाइफ है उसके बारे में भी पता चलेगा, और वो क्या करते हैं लाइफ में, क्या पर्पस है उनका, उसके बारे में भी पता चलेगा। तो ये बुक जो है वो एंथ्रोलॉजी ऑफ पर्पस है, मतलब कि आप जी इस बुक को पढ़ के अपना पर्पस डिफाइन कर सकते हो कि क्या आपका लाइफ का पर्पस है, आप पीछे अपने पीछे क्या दुनिया में छोड़ के जाना चाहते हो। ये एक दूसरी किताब है। पहली किताब इसकी आई थी उसमें 30 ऑथर थे, जो दूसरी किताब आई है उसमें 40 मेरे ऑथर पास हैं। पहला वाला एडिशन है डॉक्टर राजीव, दिस इज द वाह पार्ट वन एंड फर्स्ट व्हाट यू फर्स्ट होल्डिंग इज पार्ट टू। पार्ट टू, राइट। सो इस तरह से हमारा जो उद्देश्य है, हम लगातार इस पे काम करेंगे, और हर 6 मंथ में एक डिफरेंट ऑथर्स की पर्सपेक्टिव को लेके आएंगे, उनके विचारों को लेके आएंगे और उनको दर्शकों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो ये हम हमारा मिशन जो है ये सोशल सर्विस का मिशन है। इस किताब की जो भी बिकने से जो भी प्रोसीड्स आती हैं उनको हम दो चैरिटी डोनेशंस को डोनेट करते हैं, जो कि एक बच्चों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल होता है और एक दूसरे गरीबों को खाना खिलाने के हिसाब से जो यूज होता है उन संस्थाओं ओल्ड को एज। डोनेट किया जाता है ओल्ड एज के जी लिए। तो इसमें कोई भी कमर्शियल पर्पस नहीं है कि हम ऑथर्स ने अपने हिसाब से या अपने खर्चे पे ये किताब लिखी है। सबने अपने अपने काम किए हैं, एडिटिंग भी अपने आप की, डिजाइन भी अपने आप किया, पब्लिश भी अपने आप किया, सब अपने आप किया। तो हमारी सेल्फ क्रिएशन है ये और लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो हम कहेंगे कि ये नोशन प्रेस पे और amazon.com पे, flipkart.com पे ये किताब उपलब्ध है। लोगों को जाकर वहां पर इस किताब को खरीदना चाहिए और उस पर्पस को अपने ढूंढना चाहिए कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, एग्जैक्ट। क्यों करना है। और जब वो ये करते हैं तो उनको इस किताब के खरीदने के दो एडिशनल बेनिफिट होते हैं कि हम उनको दो बोनसेस देते हैं। तो पहला बोनस तो है कि आप किताब खरीदोगे और आप पढ़ोगे उसको तो हमारे ऑथर्स के बारे में पता चलेगा, और आपको दो सेशन जो हैं, हम प्रीमियर मास्टरमाइंड है हमारा मेंटल रिजिलियंस मास्टरी, जिसमें हम स्किल सेट एंड माइंड सेट, आपको पता लगता है कि आपका हृदय, दिमाग और आत्मा कैसे सिंक्रोनाइज होते हैं, उन सब के ऊपर कैसे काम होता है, उसके बारे में आपको दो सेशन मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा हमारा जो ऑफ शूट है फायर टू वायर, उसके 6 सेशन। प्राइसलेस है वो डॉक्टर राजीव, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोले, दैट इज सो हाँ, प्राइसलेस। वो वो हम उसका 6 सेशन जो हैं वो एवरी डे होते हैं, 5:15 बजे सुबह से 6:15 बजे तक। वो भी 6 सेशन फ्री देते हैं उनको। और अगर वो दोनों सेशन ज्वाइन करते हैं हमारे फायर टू वायर और MRM मेंटल रेजिलियंस मास्टरी, तो उसके बेसिस पे उनको जो फेसबुक का ग्रुप है, नेटवर्क हमारा, उसके अंदर भी एंट्री मिल जाती है। तो वो लाइफ लॉन्ग उस नेटवर्क के पार्ट बन जाते हैं। तो उसके बेनिफिट क्या हैं वो आप आने के बाद ही पता चलेगा कि अनलिमिटेड बेनिफिट है। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो MRM और फायर टू वायर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तो आपको भी जो नई किताब आएगी उसमें लिखने की पॉसिबिलिटी मिल सकती है, अगर आपके विचार भी वही हों जो सबके विचार हैं। मतलब आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो सोसाइटी को, आप दूसरों को जो सोसाइटी से लिया है उसको वापस करना चाहते हो, पे बैक बिफोर यू डाई, तो आपको जरूर ये किताब खरीदनी चाहिए और इन इस तरह से अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, अपने दोस्त बढ़ाओ और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ। तो यही, आई थिंक हम आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। सीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम थैंक यू निकाला सो और हमारे मच। दर्शकों के लिए आप आए और आपने उनकी रिक्वेस्ट पे हिंदी में बात की। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम तो इंटरव्यूज नॉर्मली इंग्लिश में करते हैं, बट विद दिस आई विल स्टार्ट डूइंग इन हिंदी आल्सो। सो फॉर अस वी आप आर कैटरिंग टू हिंदी सेशन, सो वी शुड डू दैट, वी विल Dr. डू दैट। Rajiv, it's my pleasure. It is an honor. It was such a, I had such a great time on this session with you. आपके साथ बहुत बहुत मजा आया बात करके। जाने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये पूरे एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज जो आई विल टेक अवे इज दैट हमेशा से मैं
ये जो NENN जो है, जो हमारे मास्टरमाइंड में सिखाते हैं, जो ग्रेटिट्यूड, ये जो है मेरे लिए बहुत काम करता है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रमोट टू पीपल। इट्स आल्सो बिकॉज दिस इज व्हाट इस्लाम आल्सो प्रमोट्स, बी इन द स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। शुक्रगुजारी में रहने में इतना फायदा है, हाँ, आपको जो कुछ चाहिए ना, सब मिल जाएगा। सब आप मिलता है। मांगने से ज्यादा, और आपने जो मांगा वो भी, और जो नहीं मांगा वो भी। सो इट्स लाइक स्टे ब्लेस्ड, stay happy, क्या and I बात है! think life is beautiful. Don't make it stressed up, and just be the best version of who you are by knowing yourself. And आप अपने आप को जितना बेहतर जानेंगे, आप उतना बेहतर अपने आप से, you can't love somebody who you don't know, so learn to know yourself Wow, every day. wow, wow. So this is the first thing we learn in Fire to Wire. सेल्फ रियलाइजेशन, नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। जो हिंदी के और हिंदुस्तान के जितने भी रिलीजन हैं, सब में ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले अपने को जानो। जब तक अपने को नहीं जानोगे, दूसरों को जानने की कोशिश करना भी बेकार है। और दुआ भी नहीं आती है फिर करने के लिए, दुआ लाइक भी आई नहीं टू आती नॉट है। थिंक वर्दी ऑफ बीइंग आस्किंग व्हाट आई नीड टू आस्क, बिकॉज मैं सोचती थी कि मुझे पता ही नहीं है मुझे मांगना क्या है। नाउ दैट मांगना यू क्या नो है? यू व्हाट यू वांट, आस्क। लाइक द ऑलमाइटी, द यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू गिव। तो आप तो जान लो कि आपको चाहिए क्या। सो दिस चाहिए देन क्या? दिस लॉट। हाँ। हाँ, तो ये भी वही ये सब। भी एक बहुत बड़ी कला है। लोगों को आता ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्या मांगना है मुझे, क्या चाहिए मुझे। जब तक उन्हें और यही नहीं वहां पे पता भी होगा क्या चाहिए, वो लिमिटेशंस, कहाँ से मांगेंगे? हाँ। वहां पे भी सेल्फ डाउट और लिमिटेशंस के, मांगू या ना मांगू, हाँ, क्या आई एम मांगू या वर्दी ना ऑफ मांगू। आस्किंग। और मांगते हैं तो सीधा ही जाके भगवान से मांगते हैं कि मुझे ये मिल जाए, बट उसके लिए हाँ एफर्ट्स नहीं करते। जब तक एफर्ट्स नहीं करोगे तो जी। भगवान भी आपको कुछ नहीं देगा। आपका मांगने से यूनिवर्स को पता चलता है कि आपको ये चाहिए। पर जब आप मांगना शुरू करते हो, जब आप काम करना शुरू करते हो, तब वो आपको मिलना शुरू होता है। वो भगवान कैसे देगा वो आपको नहीं पता, बट काम तो आपको ही Yes, करना do पड़ेगा। not get attached to the outcomes. Just do what हाँ, you have to do, your डू, share in the world. जस्ट डू एंड Thank एंजॉय you, योर Dr. जर्नी। Rajiv. It was such a pleasure being here. So nice to talk to you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू सीरत। We will do sometime again later on Hindi version, full Hindi version for our Definitely, audience. definitely. Please do invite me. I'll be more than glad to be attending your sessions anytime. बहुत शुक्रिया. Thank you. और थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, भगवान। धन्यवाद। Thank you. भारत माता की जय। जी। ओके।
हेलो। हाँ सीरज जी। हेलो। हाँ हाँ, बोल, सुन रहा हूँ, बताइए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब, हाँ, नहीं नहीं। अरे, अभी आपके इस चैट में इस टाइम पे किया है हमने, तो तीन चार लोग थे लाइव और तीनों कमेंट लिख रहे थे, मैं तो कमेंट देख रहा था उनके। तो उसमें से किसी ने बोला हिंदी में करो, तो मैंने कहा चलो हम बोल देते हैं हिंदी में, हमें क्या प्रॉब्लम। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, करूंगा, मैं हिंदी में भी करूंगा। मैं तो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। हमें क्या है, दोनों ही ठीक है। हाँ। नहीं किया। हाँ, नहीं नहीं, करना चाहिए, करेंगे करेंगे। बस मैं वो देख रहा था कि मैंने जो कमेंट लिखे, वो मेरे को उनके दिख रहे थे, मेरे फेसबुक पे, लिंक्डइन पे वो जा नहीं रहे हैं, तो मैं वो सेटिंग ही चेक कर रहा था अभी, कि लोग कमेंट लिखेंगे तभी पता चलेगा ना मुझे। अभी मैंने चेक किया, तो वो कुछ सेटिंग चेंज करनी है, तो मैं कर रहा हूँ। बट 2-3 दिन में सब यूज टू हो जाऊंगा मैं टेक्नोलॉजी के ना, मैं भी सीख ही रहा था टेक्नोलॉजी। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, फ्लेवर अलग आ जाता है वो। हाँ। चलो, बहुत अच्छा लगा। देखो, इस तरह से ना हम सब बातें कर रहे हैं आपस में, तो डेफिनेटली सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वही चाहिए हमें, सबको सब एक लेवल पे आ जाए। हमने तो बहुत काम किए हैं, तो इसलिए हमें। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बोला आपने। नहीं नहीं, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज ओके। यू कैन टॉक, देयर इज नो प्रॉब्लम। हेजिटेशन खत्म होना है, वही चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। यू विल बी फाइन, डोंट वरी। तो आपको ना, अगले, अभी तो ऐसा करेंगे, इस वीक में तो मैं ये पूरे कर रहा हूँ 40 ऑथर्स के। आपको मैं 5-6 तारीख के बाद एक बार और बोलूंगा, 1 घंटे का इंटरव्यू हिंदी में करेंगे पूरा। आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। हाँ हाँ, करो, सब सीखेंगे, सब मिलके आपस में सीखेंगे। जो कमजोरी आपकी है वो मैं पूरी करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीखना हो बता देना। ठीक है। हाँ। चलो, ओके। हाँ 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 हाँ, करो करो, वो भी जरूरी है। तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा आज, ये सब लिख दो जो लिख करा है हमने। ठीक है। वाह, ग्रेट, चलो करो। ठीक है, थैंक यू। ओके।